गुड इवनिंग, नमस्कार और वेलकम टू गना शॉट। आज हम देखेंगे टू सेशंस ऑफ अ सिक ड्रैगन। व्हाट्स दिस टू सेशंस ऑल अबाउट एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? You have to understand this very seriously. In terms of uh, you know equivalence, the 20 party congress which was held in October, जब वो 20 party congress हुआ था, that was the major event to ensure that Xi Jinping is selected for the third term. Whereas the two sessions is inauguration of that third term. And as he is being inaugurated in the third term, he is also giving out his plans of the new cabinet and his new team. ये जो चाइना का जो नया रुख है, इससे हमें पता चलेगा, राइट? और इसीलिए ये टू सेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो टू सेशंस इस साल का जो हो रहा है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे हिसाब से चाइना इज अ सिक ड्रैगन। वो बीमार ड्रैगन है, बहुत बीमारी है। और जैसे इस दृश्य में दिखाया गया है, जी जिनपिंग अपना सर कुचला रहा है कि मैं करूं क्या इस ड्रैगन के साथ। और ये हालत ऐसे ही है। ये पूरा टू सेशंस में जब हम ये विश्लेषण पूरा करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये वापस कार्टून लेके आएंगे, राइट? इससे पहले कि मैं बिफोर आई गो अहेड एंड टॉक अबाउट द टू सेशंस, I want to give a little idea about the feedback I've got. Now, it's important because I communicate with all of you. You know my mind, and I get to know your mind, right? Beyond the whole thing. Now, Mohan Nair says, I admire and give great credence to the information on all your China and Pakistan related vlogs and conversations. But this one in particular is outstanding for its clear, no nonsense, and succinct quality. Bravo, sir. ये जो comment दिया है, this is of the last one on I did on two sessions. I would like to tell all of you, जो वो वीडियो था, that was pre two sessions, कि run up to the two sessions क्या है। अभी हम देखेंगे two sessions में हुआ क्या, right? Adakot says, sir, this is really wonderful. Hard to imagine why viewership doesn't reflect it. If liking, subscribing is how it can get more visibility, then all of us should do our bit to make that happen. Well, I'm in no hurry. ये होगा। मेरे को पूरा विश्वास है आप सब लोगों के ऊपर कि there will be more subscribers to the show. And I would request again all of you to like, because if you like this show, automatically Google starts, directing views here and people will subscribe. Okay. And of course, Bhakti Kulkarni, Bhakti is here. Jai Hind, Bhakti. Thank you very much, sir, for this upload. It is very important to understand how China works from within, which is difficult to understand from outside China and from Chinese perspective. That's the whole aim of this show. I have been a student of China now for about good 40 years. I've been reading China. And it's my business to tell you all what China is. Our generation went through knowing about China with no sources. You think of a time when we didn't have internet. Books about China were difficult to get. Information was hard to come by. It was a closed economy and it was a closed society. आजकल जो है इंफॉर्मेशन फ्लो काफी है, जिसके जरिए हमें पता चल रहा है कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है और चाइना का रुख क्या है हमारी ओर. Why is it important? Right, before I get to know why is it important to know about China, I want to tell you, Ghana Short will now operate on 3 different
lines. First will be a peek on everyday China, where I'll come. It will be my analysis. If needed, I'll get someone else, but I want to analyze China the way I haven't been analyzing, so that आपको पता चले कि मेरे दिमाग में क्या है. Right? No second hand talk. Straight one to one. आप पीटर जिहान वगैरह को देखते हो, वो भी वन टू वन ही बात करता है, मैं भी अपना वन टू वन बात करूंगा. आई एम नॉट वेरी आई एम नॉट गोइंग टू शो समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड वगैरह. मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा चाइना क्या है. राइट. सेकंड, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज दिस सेंचुरी, वो जो राजीव नारायणन के साथ मैंने शुरू किया है. राइट. और ये जारी रहेगा. जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज जो हमारे देश के लिए जरूरत है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, और मेरे फौजी भाइयों को बताऊंगा, और जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं उनको भी बताऊंगा कहाँ इसको इस्तेमाल करना है. और ये जो नया है कासा डायलॉग्स, ये लास्ट वीक आई स्टार्टेड इट. एक हमने किया न्यूक्लियर ओवरहैंग के बारे में, और दूसरा हमने उससे पहले किया कर्बिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक. दोनों माने हुए लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो मेरे साथ आए थे. और मेरा वादा है आपको, आई विल गेट यू द बेस्ट इन द बिजनेस. और ताकि हमारे देश को जो सर्व किया है वो आपको बताएंगे कि हमारा देश का हालत क्या है और हमारा देश कहाँ जाना चाहिए. और ये होंगे इंडियन आर्मी के, इंडियन नेवी के और इंडियन एयरफोर्स के. राइट. आप सब लोगों को पता होना चाहिए, राइट, कि सोच विचार, स्ट्रेटेजिक सोच विचार क्या होता है. मैं उनसे बात करूंगा और उनसे निचोड़ दूंगा कि उनके दिमाग में क्या है, और आपको बताऊंगा. और यकीन मानिए, कई लोग तो आएंगे जो उतने रैंक नहीं होगा, पर मैं चुन के ले आऊंगा जिनके पास दिमाग है और सोच विचार है. आपको, जैसे हम कल बात करेंगे जनरल शौकीन चौहान के साथ नेपाल और भूटान के बारे में, और चाइना एक अलग नज़ारा. अगला हफ्ता जनरल सतीश दुआ के साथ हम बात करेंगे कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर में क्या नया रुख है, किस तरीके का क्या नया मोड़ है कश्मीर के ऊपर. और उसके बाद अगले फ्राइडे को मैं बात करूंगा ब्रिगेडियर अरुण सहगल के साथ पाकिस्तान के बारे में. इसके बीच में बाकी भी आएंगे. मेरा विचार है कि हफ्ते में 4 से 6 प्रदर्शन दूंगा आपको, प्रेजेंटेशंस इन 3 विषयों के ऊपर. और मैं 8 बजे आऊंगा आपके साथ बात करने के लिए. अगर आप सोचते हो कि 8 बजे अनकंफर्टेबल है तो बताइए, हम 8:30 बजे कर देंगे. उससे ज़्यादा मेरे को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आई एम एज्ड और मेरे को ज़्यादा लेट बैठना ठीक नहीं, मुनासिब नहीं है. राइट. वैसे 8 बजे ठीक है, क्योंकि यू कैन सिट विद योर कॉकटेल और मॉकटेल, हैव अ टॉक अबाउट दिस एंड देन गो, एंड देन मे बी यू could have a look at your prime time TV and all that. But what you're going to get from me is analysis, hardcore analysis, the way I have learned. Okay, right. इससे पहले कि 2 सेशंस के बारे में बात करूं, मैं बताना चाहता हूं, ये आर्टिकल निकला, चाइनीज सोशल मीडिया साउंड्स अलार्म बेल अबाउट इंडियाज डेवलपमेंट एज एप्पल्स नेक्स्ट हब फॉर आईफोन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन. उनके जो वीबो और वी चैट के अंदर कलबली है आज के दिन या 2 दिन पहले, जब भी है, कि अगर एप्पल आईफोन का मैक्सिमम प्रोडक्शन इंडिया से हो रहा है तो हमारा क्या होगा. और ये मानते हैं एप्पल इज अ वेदर वेन, वो हवा का रुख दिखा रहा है, और इस हवा के रुख में अगर एप्पल आ गया तो बाकी भी पीछे लाइन बंद हो जाएगा. वैसे भी डेल ने बता दिया कि 2025 तक हम कम कर देंगे चाइना में. ओके, अगर डेल ने भी कम कर दिया और एप्पल ने भी कम कर दिया, बाकी भी भीड़ आ जाएगा इधर. राइट. इंडिया का तो
मान उठ जाएगा और हमारा अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. देयर इज नो डाउट और इकोनॉमी विल गो. I will give you an analysis of India's rise sometime down the line when I get a chance. I have my own views about it. And India is an unstoppable force, irrespective of which political party is there. And it is unstoppable because all of you and me put together, and because of our generations behind. Right, we are a civilizational force. Okay, but let's ये इसके बारे में दोबारा बात करता हूं मैं. Why is this thing important? We are eating their lunch. हम उनका खाना छीन रहे हैं. अगर हम उनका खाना छीन रहे हैं तो वो हमारे ऊपर कूद पड़ेंगे. अगर वो हमारे ऊपर कूद पड़ेंगे और हमारे साथ लड़ाई करेंगे या कम्पीट करेंगे, हमें पूरा सतर्क होना चाहिए कि इनके साथ कैसे निपटना है, मिलिट्रली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. और चाइना के साथ डील करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉलिटिकल. अगर पॉलिटिकली आप चाइना को परख के समझ सकते हो तो आप जीत जाओगे. इसीलिए मैंने ये पीक इनटू एवरीडे चाइना किया. जैसे वो कमेंट आया था, आई एम टेलिंग यू व्हाट चाइना थिंक्स अबाउट अस. दैट्स इंपॉर्टेंट. एक दृश्य है. मेरा एक कमेंट आया था कि सर आप तो वही रिपीट कर रहे हो चाइना के बारे में, पॉपुलेशन, ये इकोनॉमिक्स. भाई यही तो है देश में क्या होता है. ओके, राइट. ये 2 सेशंस क्या है? अगर पूरा देखा जाए तो 2 सेशंस वाज अ फील गुड फैक्टर रिपोर्ट कि भाई सब ठीक ठाक है. इट्स ऑल्सो पॉलिसी रिपोर्ट, इट्स ऑल्सो पॉलिसी स्टेटमेंट, एंड कुछ हद तक एक बजट था. इट वाज द स्टार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. जैसे हमारे देश में लोकसभा शुरुआत में होता है, पर हमारा थोड़ा अलग है क्योंकि बजट एक अलग दिन होता है. और जब लोकसभा शुरू होता है कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आता. बाद में प्रधानमंत्री और अनेक मंत्री अपना अपना पॉलिसी देते हैं और बजट में आता है. पर इनका अलग, इनका सब कुछ मेल मिला के एक ही दिन में 2 सेशन में ये कायम करते हैं. यही बात हुआ है ये पूरा 2 सेशन में. और ये क्या बोला है इन 2 सेशन में? इन्होंने बोला जीडीपी टारगेट 5%, ग्रोथ को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, चिप डेवलपमेंट के लिए स्पेशल फंडिंग, पब्लिक सिक्योरिटी इंक्रीज बाय 6.4%. पब्लिक सिक्योरिटी मतलब इंटरनल सिक्योरिटी, उनका लोगों के ऊपर काबू करना. ये पहले इट वाज 4.7%, अभी 6.4% हो गया. मिलिट्री स्पेंडिंग अप बाय 7.2%. चाइना में मिलिट्री स्पेंडिंग लगातार for the past 10-15 years, military spending is going up by 7 to 10%, compounded over years, right? Along with this, public security funding has also been going up. इसका मतलब वो उनका जो पूरा funding for security, internal and external put together, is over 13 to 15%. If you take hidden things, it will go up to 18 to 20%. China is a security state. इसीलिए अभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं 20th पार्टी कांग्रेस के बारे में. 20th पार्टी कांग्रेस में जो शब्द बार बार इस्तेमाल किया गया था बाय जी जिनपिंग, वो है सिक्योरिटी. उनका अव्वल प्रॉब्लम है सिक्योरिटी. उनको डर है किसी न किसी दिन अंदरूनी क्या व्हाट इज दैट कलर रेवोल्यूशन ना हो जाए. और ये कलर रेवोल्यूशन के बारे में जी जिनपिंग को डर है क्योंकि वो जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मीट में गए थे पिछले साल, वहां भी उन्होंने जिक्र किया कलर रेवोल्यूशन के बारे में. ओके, post COVID they want to focus on vulnerable groups, elderly, children and people with underlying disease to prevent severe illness, क्योंकि ये सब मारे गए हैं. They want to oppose Taiwan independence. ये तो बहुत बड़ा क्लियर है. 20th पार्टी कांग्रेस में अभी में क्या फर्क है इनका रुख में? 20th पार्टी कांग्रेस में इन्होंने संकेत दिया था कि हम मिलिटरली ताइवान को
कब्जा करेंगे। अभी वो बात टल गया है। मेरे ख्याल में इनको अकल आया है कि ये नामुमकिन है और इनकी फौज के बस की बात नहीं है, राइट। एंड वो they're adopting a softer stance towards Taiwan, and they want to get hold of Taiwan politically, culturally, and cooperation, and right, all that. I'll talk about it a little later towards the end. What the foreign minister said, there, उसमें संकेत और clear है, right? So that is important for us to understand. क्यों? ताइवान को अगर वो कैप्चर नहीं करेंगे, कर पाएंगे, तो उनका रुख इंडिया की ओर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ताइवान को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं और उनका शक है कि वो मिलिट्रीली दे कैन कैप्चर ताइवान, इट गिव्स एन इंडिकेशन that their army, navy and air force are not yet up to it. Very important two indications from this I take. We have to be alert, but we have to be confident that we can tackle them. And उसका जो नजारा हमने यांगजी में ऑलरेडी देख लिया जब हमने उनको धकेल दिया, right? They want improved foreign business environment for foreign investors, attract foreign investment and facilitate the launch of landmark foreign funded projects. निवेश चाहिए उनको, निवेश इसलिए चाहिए चाइना के अंदर पैसा नहीं है, उनका अर्थव्यवस्था में दम नहीं है कि वो they can do all this. They want to reverse decoupling. Decoupling के बारे में हमने एक बार पहले आप लोगों को बता दिया था, वो एक रियलिटी है इनके लिए, राइट? ओके देयर आर, इसी में इन्होंने बोला है, देयर आर कंसर्न्स अबाउट एक्सटर्नल अनसर्टनिटीज, हेडविंड्स, ग्लोबल इन्फ्लेशन, राइट, वीक ग्लोबल इकोनॉमी। ये वीक ग्लोबल इकोनॉमी और इन्फ्लेशन किस लिए है? यूक्रेन की लड़ाई की वजह से है, राइट। एक्सटर्नल कंटेनमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए चाइना को, और हमें भी डाउट नहीं होना चाहिए कि चाइना को घेर लिया जा रहा है थ्रू इंडो पैसिफिक अलायंसेस, एवरीथिंग। और ये सब कुछ हमने वो जलमूर्ति के साथ जो बात किया था उसमें भी बोला था, कर्बिंग चाइनीज मिस एडवेंचर इन इंडो पैसिफिक। और ये जितने फर्स्ट आइलैंड चेन के देश हैं वो अपना फौज को बढ़ा रहे हैं, दे इंक्रीजिंग देयर मिलिट्री स्पेंडिंग एंड देयर कोऑपरेशन इन बिटवीन देम टू फोर्स चाइना टू टेक अ बैक स्टेप। ओके, सो दे फील इट, दे बीइंग कंटेंट। और दूसरी ओर इंडिया है जो हट नहीं रहा। चाइना इज अंडर कंटेनमेंट, काफी दबाव में है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी इज वीक, इट इज नॉट सॉलिड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज स्टिल वीक। रिस्क रिमेन इन द प्रॉपर्टी मार्केट। ये सब, इसलिए एक महीने से मैं वीडियो निकाल रहा हूं। सब लोग बोल रहे हैं कि भाई साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट क्यों निकाल रहे? क्योंकि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ये संकेत आ रहे हैं। बड़ा सिंपल है, राइट। चाइना का उद्देश्य क्या है, एम क्या है? बिल्ड सेल्फ रिलायंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आगे जाके देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर इनका काफी देयर विल बी क्वाइट अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Why science and technology? Because their economy is failing. And I'll talk about this a little detail later in one of the shows, and I'll talk about the internal problems of China and why all this. But take it from me at this point of time. Because of their weak economy, the pact between the communists and the people, you give me your freedoms and I'll give you prosperity, is at risk. If it is at risk, they are diverting the uh, people's attention to technology. So you'll see this, right? Okay. It calls for a bigger push for the government, bigger role for the government to push key technologies, breakthroughs, while enterprises should be the drivers of innovation. They're looking at state economy, state driven economy. और ये संकेत हमें 20th पार्टी कांग्रेस में
पूरा हमें पता चला, और उसका आकार अभी दिखा रहे हैं, और इसमें ये कोई संकेत नहीं है कि वो किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करेंगे। हालांकि आज या कल एक और निकला है जिसमें उन्होंने बताया है कि सी जिनपिंग हैज सेड कि आई वांट टू इंक्रीज द प्राइवेट इकोनॉमी, बट कैसे करना है उसके बारे में कोई खबर नहीं है। ओके, व्हाट इज द मैक्रो इशू? एक बड़ा मुद्दा और यह बड़ा चीज जो मैंने इसमें देखा और जो भी मैंने पढ़ा, क्या है, इस साल 25 pages were allocated to reviewing the achievements and problems in the past 5 years, and 6 pages on the plans for this year. पास्ट टेंस में क्या हुआ था उसके बारे में 25 पेज का बोलबाला था कि हमने ये किया, वो किया, वो किया, पीठ तपतपाया, patting yourself on the back and all that nonsense. Very little on the future. What happened last year? Last year, more than 76% of the input was dedicated to policy decisions for the year. Last year, this was a budget for the next year. This year, it was a look over the shoulder कि भाई क्या हो रहा है, हमने तो अच्छा किया है पिछले, आगे करेंगे. Overall, there's a hazy uncertainty. अगर आप 20th कांग्रेस पार्टी का जो स्पीच है उसको देखोगे और यहाँ का स्पीच अगर देखोगे, तो दोनों का अगर मेल मिलाप और मिश्रण करोगे, धुंधला नजर आ रहा है चाइना का फ्यूचर. बात ज्यादा हो रहा है, इसका प्लान क्या है उसमें खास क्लैरिटी नहीं है. राइट, ये मेरा अनुमान है. हो सकता है ये क्लैरिटी धीरे धीरे जाके आए, हमें पता चले कि इनका क्या है, पर इनका जो प्रॉब्लम्स हैं उसके इनके जितने भी समस्या है उसका सॉल्यूशन इस बजट में या 2 सेशंस में कहीं मेरे को दिखाई नहीं दिया. ओके, कॉमन प्रॉस्पेरिटी. पिछले 3 साल से मैं हर रोज, हर तीसरा दिन यही सुनता आ रहा हूं जब भी चाइना के बारे में पढ़ता हूं कि कॉमन प्रॉस्पेरिटी, कॉमन प्रॉस्पेरिटी. जी जिनपिंग का सिग्नेचर कैंपेन था कॉमन प्रॉस्पेरिटी. कॉमन प्रॉस्पेरिटी, व्हाट इज इट? टेक मनी फ्रॉम द रिच, गिव इट टू द पुअर. ट्रांसफर ऑफ वेल्थ from the higher edges of society to the lower edges of society. In 2 sessions, एक बार भी कॉमन प्रॉस्पेरिटी के जिक्र भी नहीं हुआ है. 20th कांग्रेस पार्टी में अक्टूबर में कॉमन प्रॉस्पेरिटी का गीत गा रहे थे ये. पलट. Promoting growth through state-led enterprise was the theme in 20th Party Congress. Now, there's almost a silence. और ये और तो और ये बोल रहे हैं कि चाइना है सिक्योर्ड विक्ट्री ओवर द कोरोना वायरस पैंडेमिक, बट ये नहीं बताया कि भाई ये जीरो कोविड का क्या फर्क असर पड़ा. ये भी पीठ तपता पा रहे हैं कि भाई हमने जीत हासिल कर लिया, वी हैव वन अगेंस्ट कोरोना वायरस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज अ मूवमेंट विद इन चाइना of ultra left people who have come up, and this has come up quite a few times. Sometime last year, last year, I remember doing a show with Adi where I spoke of this, that there are ultra left guys who are harassing private businessmen, who are forcing people to talk about communism, back to old Maoist communism. That's a strong force, and that is likely to hijack Xi Jinping's agenda. But the thing is, it is Xi Jinping who has actually instigated this ultra-left force. So they're caught in their own struggle at this point of time. And we can discuss this. You can ask me questions and I'll talk about it. Okay. Something else which is very funny in this report. China will gradually deepen Sinoization in religious affairs.
चाहे आप मुस्लिम हो या बुद्धिस्ट हो या जिंजियांग के निवासी हो या क्रिश्चियन हो, यू हैव टू बी साइनेसाइज्ड, राइट? सो दूसरी बात, इसका दूसरा पहलू यह है कि जो बाहर निवासी हैं, नॉन रेजिडेंट चाइनीज, राइट, उनको भी लपेट लेंगे फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द मदरलैंड. Dangerous. It is like saying tomorrow that look, all those who are NRIs living in USA and Africa, or for that matter Europe, will contribute towards India, not there. उन्होंने तो पुलिस स्टेशन भी लगाया बाहर. It's well known. Okay. People's Liberation Army should intensify military training and preparedness across the board to boost combat readiness. This is a regular theme. They're not confident of the PLA. They're not confident of the PLA. This is a second. ये दूसरा पहलू है. The second look at it. First, they have said we'll look at Taiwan non-militarily. Now they're saying boost combat readiness. You stitch the dots. They're a problem. Okay. China has promoted. Hey, this is funny. They say China has promoted high quality cooperation under the Belt and Road Initiative. What cooperation? I did one seek into China with all of you, where I highlighted the problems BRI is having in Africa. We talk of Zambia, Gambia, Angola, Kenya, right? Zimbabwe. Everywhere they're having problems. So where is this high quality cooperation? I will put it as high quality coercion. Right. Okay. Like I said, they're giving a tremendous boost to science and technology. And as part of this, they're spending heavily on new technologies and space. The problem in this, which we discussed day before yesterday in this nuclear overhang business with General P.R. Kumar, you stitch this and that. Are they going to nuclearize space or militarize space? It's a question mark. It's a huge question mark because they're going to bet on it. And if they do that, then you have a nuclear gun from the space. And how do you offset it is a challenge. Important. And we'll see how it goes. Maybe down the line, I'll analyze it as part of CASA dialogues as we are clear as to how things are happening. Okay. But then you have to understand, as they are putting their best foot forward for technology, this chat GPT, they say is beyond them. 1 year back or 6 months back, everyone felt that AI mein China is ahead of everyone. But they have not come out with chat GPT. The moment chat GPT came out in USA, the Chinese are loafing around like headless chicken. Bhai, ye kya ho gaya? And they feel that they've been pushed aside and they have not been inventive enough. And this is a repetitive thing you'll see. A lot of talk about China's development in technology, but when it comes to the crunch, they're not ahead of the loop. And I think that's the truth even for their military. This is a very, 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 very important article. I can't get my money out, says billionaire Mark Mobius. Mark Mobius was, the head of Franklin Templeton. So whatever money he's got, he can't get it out. Why? When do nations restrict money movement outside? कब होता है ये? आप अगर जाके यूएसए में या कहीं भी आप पैसा निवेश करते हो, अगर आपको रोक है कि आप वहां से पैसा नहीं निकालते हो, कब होता है ये? जब आपका अंदरूनी हालत खराब है और पैसा नहीं है. और चाइना में ये प्रॉब्लम है आज के दिन. और ये तो पब्लिक आर्टिकल है. और 2 दिन पहले मैं मेरा पुराना ऐसे दोस्त बन गया, यूएसए का निवासी है, भारतीय निवासी है यूएसए में.
और वो he manages an international hedge fund and all that, and he was speaking to me from Singapore कि चाइना का हालत बहुत कस्ता है, हमें पता चल रहा है कि राइट, so there is a major problem in China financially. They are in in a tough place, और इसीलिए इनका अर्थव्यवस्था भी it's in a tough place, right? So if you, अगर आपका अर्थव्यवस्था डाउन है तो that's why they are betting big on technology, but then that's a later days thing. Like I said, today I'm just going to give you what संकेत क्या है. Each of this I'll analyze in detail. Okay, look at this. China's new leaders need action, not slogans, to aid private sector confidence. The private sector is still not interested in getting back to China. 2 years back, Xi Jinping just broke all the big names in the private sector. Alibaba, Meituan, Tencent, अब जितना भी बोलो. Complete the educational tech sector, he just finished, wiped it out. And these fellows were the engine of China's growth. If your private sector doesn't grow, China will find it difficult to even touch its, GDP growth rates. Some rebound will be there in China. I mean, let's be very clear. Now that सब हट गया है, कुछ तो रिबाउंड होगा, उनका जीडीपी अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, सब कुछ. पर क्या उतना होगा जितना हम सोचते हैं कि होगा, कि ये सुपर पावर बन जाएगा? मेरे ख्याल में नहीं. वो दिन गया. मेरा अनुमान है कि वो दिन गया जब आप सोच सकते हो कि चाइना इज अ ग्रेट राइजिंग सुपर पावर. चाइना हैज पीक्ड in my estimate. Right. The last speech of Li Keqiang, he appeals for economic recovery. Why is he appealing for economic recovery? थोड़ा psychology लगाइए. क्योंकि उसका डर है कि नहीं होगा. ये देखिए, जैसे ये ली कीचियांग का लास्ट पब्लिक अपीयरेंस है, वो बाहर जा रहा था. When he walked back to his chair, there was no obvious eye contact between Li Keqiang and Xi, who sat next to him. बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से दूसरे आंख मिला नहीं रहे थे, राइट? पर ली कीचियांग के लिए काफी अप्लॉस था. खड़े होके उन्होंने थाली बजाया. ऑब्वियसली ये जो पूरा कांग्रेस में है ना, थोड़ा प्रॉब्लम है. पर शी जिनपिंग का कब्जा कहां है? टॉप लीडरशिप के ऊपर. सो देयर इज सम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. क्या ये बड़ा इंस्टेबिलिटी हो जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात है. ये संकेत है. चाइना में जब आप पढ़ते हो ना, छोटे छोटे चीजों के ऊपर आपको मायना देना पड़ेगा. बट लेट अस सी वेयर इट गोस, बिकॉज अनलेस politically they are very clear, it might, they might struggle. And this new team so far has not given very clear ideas as to where it is heading. Okay, and then there are reports that Xi Jinping is going to tighten his grip on everything. ये तो वन मैन है, ये वन मैन गवर्नमेंट है. और इसके प्यादा वो जिसने जो भी whatever he spoke in the 20th Party Congress, all his minions who are in the Politburo and the Standing Committee or his Council of Ministers whom he has nominated are parroting now. So there's a surreality of this whole story. Okay, and that's the unsureness which China is exhibiting at this point of time. Now, for the first time, Xi Jinping, on the sidelines of this 2 sessions, in one meet,
He said Western countries led by USA have implemented all-round containment and suppression of China, which has brought unprecedented severe challenges to the country's development. He's feeling it. If he's feeling about USA, his feeling about India is not far back. Remember that. And I have said, ये repeatedly मैंने बताया है, and I've proven it by date wise, that whenever, जब भी जी जिनपिंग ने हमारा प्रधानमंत्री को मेल मिलाप किया या वो इंडिया आए या और कहीं मिले, उसके 1 या 2 महीने के 1 महीने इस साइड या उस साइड कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ है ऑन द बॉर्डर, right? And as per him, the risks and challenges we face, what China faces, will only increase and become more severe. So this is a pretty aggressive statement coming out from Xi Jinping, right? आज तक ऐसे aggressive statement नहीं आया. लोग गुस्सा कब होते हैं? या डर से या वैसे गुस्से से? क्या है? ओके, फॉरेन मिनिस्टर ने के बात देखे, ये जो आफ्टर द 2 सेशंस द फॉरेन मिनिस्टर हैज कम आउट विद दिस ब्रीफ. इससे संकेत मिलता है कि जी जिनपिंग का सोच विचार क्या है, और ये 20th पार्टी कांग्रेस के साथ अगर आप लाइन जोड़ोगे, एक ही लाइन चल रहा है. चाइना हैज नॉट सप्लाइड वेपन्स टू रशिया, साफ मना कर रहे हैं. He says China and Russia set a good example for international relations. इसका मतलब आगे अगर अब जाके देखेंगे तो चाइना और रशिया का मेल मिलाप और बढ़ेगा. He has said US hit the brakes to avoid conflict and confrontation. He was the Chinese ambassador to USA before he took over this. वहां जब था, like John Doe pointed it out to me, he didn't do much, he didn't achieve much. Right? He was just a wolf warrior. He came back and now he's become a wolf warrior again. They're trying to be conciliatory on Europe. He says the idea of wolf warrior diplomacy is a narrative trap. It's just being posed on China. ठीक है, ये कहानी है, ये हमें बुरा दिखाने के लिए, wolf warrior. But we know China and Japan are close neighbors and need each other. So there's an outreach to China, to Japan. Why? Because Japan has declared China as a threat, and it has doubled its defense spending. उनको डर है जापान अगर दोबारा it becomes a strong army, it could become a threat to China. Then China will have a problem. The US Indo-Pacific strategy is Asian NATO. Quad की बात नहीं की, Indo-Pacific strategy. So if there's an Indo-Pacific strategy, the Indo part is India, NATO, right? BRI, they say, is high quality and sustainable. We know how it is, so it's a joke. I just put it as a joke. The last part is interesting. The two sides of the Taiwan Strait belong to one family of brothers and sisters called China. So now Taiwan has become brother and sister. कल के दिन वो उसके साथ मिसाइल उड़ा रहे थे, आप बोल रहे कि भाई हम बाई बाई बन जाएंगे, चीनी चीनी बाई बाई. और मेरे को कोई डाउट नहीं है, ये बोलता जाएगा चीनी चीनी बाय बाय, और ताइवान वाले बोलेंगे चीनी चीनी बाय बाय. ओके, डेमोग्राफी, हमें सबको पता है कि दे हैव अ डेमोग्राफिक क्राइसिस. वृद्धावस्था, बच्चे नहीं है, शादी नहीं हो रहे हैं, उनका आबादी घट रहा है. उसके ऊपर एक लफ्ज भी नहीं है इस पूरा 2 सेशन में. क्लाइमेट चेंज के ऊपर कंप्लीट साइलेंस, कि वो क्लाइमेट चेंज कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, बिल्कुल जीरो. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगला मेरा पीक इनटू चाइना विल बी ऑन क्लाइमेट चेंज, व्हिच इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल थिंग, कि क्या चाइना का रुख क्या होगा. क्योंकि अगले, ये हो सकता है क्लाइमेट चेंज का असर 5, 10, 15 साल के बाद पता चले, बट ये शुरू हो गया मेरी तरफ से और मेरे हिसाब से.
और इसके बारे में मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। इकोनॉमिक रिवाइवल, कंज्यूमरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट के बारे में साइलेंस। इनका क्या पॉलिसी है? क्या वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही जोर देंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर देंगे, कंज्यूमर्स के बारे में जोर देंगे या एक्सपोर्ट के बारे में जोर देंगे? इसके बारे में भी ये 2 सेशन में कभी कुछ नहीं हुआ। एम्फोसिस जो है सिक्योरिटी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर हुआ। पर इनको पता है कि देयर आर हेडविंड्स अगेंस्ट देम एंड दे गोना हैव प्रॉब्लम्स। Their internal consolidation is on, as far as I'm concerned. They're consolidating their power within. And these are two layers because there's a lot of unrest in China. एक बार मैंने पिछले एक एपिसोड में बताया कि काफी प्रदर्शन हो रहे हैं चाइना में, उनका पेंशन्स के ऊपर, उनका मेडिकल सिस्टम में, बैंक्स में, right? We saw COVID, so it is unprecedented. So they need to hold the population in one level, and they need to hold the power structure at another level. Remember, Li Keqiang in this very thing, 3,000 people of the People's Congress gave him a standing ovation. And he didn't even meet Xi Jinping's eyes. So what is it coming through? There's some problem. We have to see how it goes. Okay. Overall, क्या रुख होगा? You'll see an aggressive and assertive China. Prepare for it. Their military posture will keep increasing. They are betting big on technology. And इसके बारे में एक climate change के बाद, और क्योंकि climate change के बाद I will touch upon again India, how they deal with India, and then I'll get back to this issue. How are they betting big on technology? What are the implications? It's a huge story. I will tell later. Internal tightening and external hardening will be a feature. They will be very tight internally, and externally they're going to be very hard. That we have seen already. India, US will be the focus. They will try to win over EU. Ties with Russia will grow. Okay, but how far they'll grow, in what direction they'll grow, is a question mark. Because both Russia and China historically have not been friends. Right? Right. China is looking at the money at the bottom of the heap. यानी कि गरीब देशों के साथ मेल मिलाप रख के उनके साथ, खास करके अफ्रीका और साउथ अमेरिका में. बट इकोनॉमिक हेडविंड्स वोंट गो, क्योंकि इनका मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ तभी हो सकता है जब इनका when they get equations right, economic equations right with the richer countries. Right? That's why I say, I end with this before I take on questions and everything from everyone. I'll go through. This is the 2 sessions of a sick dragon. I have no doubt about it. Whether this dragon will recover or not is a question mark. But it's going to be sick, there's no doubt. Right? Naveen has given, thanks a lot, Naveen. Happy Holi to everyone. I hope you had a great thing. Regarding China series, I remember seeing on TV that Park's internal policy is our external policy matter. When can we expect mainstream coverage of China? I don't think you'll get, very good mainstream coverage from our TV channels. I mean, let me be very frank. I don't think our TV channels are going into the details which are required to be done to cover China. In fact, एक आदमी ने बताया मेरे को, भाई चाइना अगर हमारे पास इतना प्रॉब्लम कर रहा है, व्हाई नॉट मेक मूवीज अबाउट चाइना, ताकि आम लोगों को पता चले कि चाइना किस तरीके से बिहेव करता है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट, let me see where we take it. Then another thing, given how Russia has got stuck in Ukraine, wouldn't that too discourage China from a Taiwan? And obviously, it just confirms. You see, they have
उनका रुख बदल गया है. They know that they can't afford to go the way they've tried earlier, right? So there is going to be a whole caution about how they're going to go about things, right? Yeah, this we have seen. Okay, uh, yeah. Let me go from top to bottom. Start giving hashtag to your videos. I'll do that. I look. I'm not too good at all this, but I'll try. Okay, dear one on radars. So, dear sir, please make one. Oh yeah, look, military technology. I'm touching the fundamentals. As we go along, I'll get into a lot of things. Don't worry. Okay. Ask me anything. Session B, ek rakke once a week. I'll do that. I'll do that a little down the line so that once things are okay. Yeah. Your time is good, sir. 8 p.m. evening, fine. That's great. I'll continue. I see a lot of people saying 8 p.m. is fine. Uh, Ame says, what's your opinion on China opening almost 110 war preparation offices across China and 90 of them are in state close to Taiwan? Yeah, dekhiye, let's be very clear about one thing. China will not give up military option with Taiwan. They have to. Otherwise, क्या है कि वो सत्ता में नहीं रहेंगे, right? But will they undertake it? That's a question. All this is to stoke nationalism, to show something कि हम करेंगे, 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 but not do it. But this signal which they're giving is very clear. But whether they will continue with this signal which they're given in this two sessions is to be seen, right? John Doe says, "Happy Holi to all." Yeah, damn. I mean, thanks a lot, John, and it's a great Holi. I'm sure we've all had a good time. Okay, then Yash Kumar says, is there any concrete plan of China regarding self-defense, self-reliance, and chip technology in these two sessions? Yes, they have a plan. Let's be very clear. They're not. They set aside a fund. They're coming out with a clear plan. But will they succeed? We don't know because all the technology which is required, whether it's the lithography or whether it's the other technologies, has been now taken out from them, right? Or rather being denied to them. So, right. So that's how it is. The next question is what to make of this Chinese dope. Yes. Nothing. Just relax. Nothing will happen. I am very confident that our armed forces are strong enough to handle anything China throws at us. And let me also tell you, I don't think China will attempt anything in this time. Right. John Doe says, Naveen, okay, okay, that's a private conversation, right, sir? Tanushri says, thanks a lot, Tanushri. I put your thing because you're one of the few, ladies who taken trouble to read. Okay. Right. What does Rahul Dravid says? It's hard to take. Yeah. Okay. Uh, okay. Yeah, with all these conciliatory messages and the realization of its containment, is it possible for China to go back to keep your head down and grow your strength doctrine and kick expansionism down the road? A very interesting question you asked, Naveen. Let me put it across. I don't think China can do that because Xi Jinping's third term and his quest for immortality as one of the great leaders of China depends on the Chinese dream. He sold the Chinese dream. Okay. What is the Chinese dream? Full modernization by 2049, great power status by then, right? A developed economy, a world class army, Taiwan integrated. He can't go back on all this. And he can't keep his head down, right? Because he's at this point of time, China is facing severe economic headwinds, as also military headwinds, as also political headwinds, right? I don't think he can keep his head down and carry on. Okay, okay. Then what's the next? Uh, right.
Okay, dictator. Ask general. Chinese technology theft days are very limited. This is going to limit their advancement in advanced technology. Do you agree? There's no doubt about it. Okay. Okay. Your viewership should be more than Arnab Goswami, sir. Thanks for your analysis. यार अर्नब गोस्वामी का व्यूअरशिप बहुत है इसलिए क्योंकि वो चिल्लाता है. So let's leave it at that. Aki, thanks a lot. China building attack from space technology. Yes, it's gonna happen. That's my guess. Okay. Anand. Lately, China and Russia have increased their gold in hope of having their currency in view of de-dollarization plan, BRICS. How would that help China recover their economy? See, it helps them because then their financial problems through the dollar is taken out. Then they rely less on the US economy, right? Then they'll start establishing their own standards. And then that gives them the ability to, over budget. And they go into deficits. They can handle debt better. Okay. If my currency is the prime currency, I can keep printing as much as I want, like USA does. You and I cannot print currency the way we want. No country can print currency without stoking inflation, except USA, because that's a global currency. If tomorrow China's currency goes up, it might not be a global currency. If the share goes up, then his ability to fund his debts goes up. That's the whole story, right? I and then what are the next question? Okay, I come to the end. I think we've had a great session. Uh, I do hope I've conveyed what we have. I've had on this two sessions, and I'll, you know, end this whole thing by saying, get your friends on board because I'm going to take you people through a very exciting phase within the next 5-6 years, right? And get strategic thinking into everyone and high class strategic thinking, right? This is my passion, so I'll come out with peek into everyday China regularly the way I do it. But technology, because look, why is technology important? You have to understand military technology. Why is it important that you also understand? If China is betting big on science and technology, and they're going to go 2 steps ahead of us in technology, this is not a competition, but you need to be there. You can't say वही वो टेक्नोलॉजी करता रहेगा हमें तो जरूरत ही नहीं है. I couldn't care a damn. I was actually yesterday we did this thing on cloud computing. I would suggest you see it and propagate it to your friends. I was horrified to know that many people said, look sir, this is a wow presentation, and people didn't know what cloud computing is. We are uh, a software superpower of sorts, and our Indians don't know what cloud computing is, and we don't even have cloud infrastructure in India of our own, and we are hostage to outside. And then how do we become a great power without technology? That is why that military technology series is important. How do we dual use the technology which you people have, and which how can it come into the army, navy, air force? Yeah, that's why I've started that. I do all these things with a purpose, and of course, I'll get the best minds and come back to you. Thanks a lot. Jai Hind. Have a great day, and have a great dinner, and take care of your families. Happy Holi, and best wishes to all of you. Thank you.